Hey, hey, sound test. Hey, hey. Hey, hey, sound test. One, two, test, test. Hey, hey. Check, check. One. Hey, hey, sound check. Hey, hey. One, two, test, test. Hey, hey. Check, check. Is it? Hey. रेट कैसा मिलेगा इनको इधर से और वो ये इधर खड़ा रहेंगे भी ना। अगर हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं फिर भी बैकड्रॉप आएगा, थोड़ा ही शिफ्ट करें। हाँ तब पुश ट्रिप आइए चलिए। हाय। I think for me it's the educative factor. I think I want to be informed about what exactly the scenario is, because we do read and we are at par with what's going on. But I think it'll be more beneficial if we watch like a whole film in detail, which will bring us on board and So that it exactly what's the scenario. basically help us also by the end of it, because the whatever summary that we read, it was written that they'll be giving us solutions also about it. So yeah, so basically that's the main reason of us coming here. I think yes, we both are very anti-littering. So that's one thing we've consciously stopped. No throwing of things here and there. Yes, of course, we've reduced use of plastic, and as far as consumption of energy is concerned, I think we're quite Yeah, conscious about water that and also. energy as well. So Yeah. yeah, so all these factors come together and you do your bit Yeah. for environment. So yes. आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करना, वाटर सेव करना, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए मायने रखती है, उसको आप कैसे देखते हैं? यार जैसे शुरू में बचपन में हम कैसे होते थे, हमें पता नहीं होता था, तो जब अगर ब्रश भी कर रहे होते थे तो टैप ऑन होता था, या जब शेव करते थे तो ये सब चीज़ें होती थी. सो व्हेन यू गेट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, तो फिर आप भी वही करते हैं कि कुछ गलत ना करें, जितना सेव कर सकते हैं एनर्जी को और पानी को और इन चीज़ों को तो करते हैं. और बीटीसी अर्थ के द्वारा इतना अच्छा इनिशिएटिव रखा गया, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे यार that we are our primary reason of being here is that we want to be informed on Yeah. what more we can do in terms of because obviously we want our planet to be healthy and to survive for much longer. और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपको फिल्म काफ़ी अच्छी धमाल, लोगों ने बहुत पसंद की। Thank क्या you. कहना चाहेंगे? थैंक यू कहना चाहूँगी सबको कि सबको पसंद आई फिल्म, और बस और भी जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखें. हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस वर्किंग विद अनुष्का मतलब इतने बड़े स्टार के साथ? बहुत अच्छा, इनफैक्ट पूरी कास्ट के साथ ही द एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर वेटरन्स, अपनी फील्ड में सारे ही धुरंधर हैं. सब लोगों को द पैशन दैट दे हैव फ्रॉम द फॉर द क्राफ्ट इज समथिंग दैट यू लर्न
from, and that keeps you motivated. So I think that way it was a very good experience. आपने देखी कि नहीं फिल्म? Of course. कैसे नहीं देखेंगे सर? Of क्या बात है? course. एक तो अच्छी लग रही थी, बहुत काम बहुत अच्छा किया था, और इन टोटलिटी फिल्म बहुत अच्छी है. सो वही मज़ा आया फिल्म देख के. मैं तो बहुत हंसा, और मैं तो इंटरवल पे ही वहाँ पे बाहर निकलती ही बोला था मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है, और जैसे ख़त्म हुई तो और बढ़िया थी. सो इन टोटलिटी मज़ा आया पूरी फिल्म देख के. Nothing that I can say right now. ऐसा कुछ. राइट नाउ थिंग्स आर ऑन. आपके फ्रेंड्स ने इंडस्ट्री में या ये जो रिश्ता उन लोगों को उन्होंने ये ग्लोबल वार्मिंग है ये. नहीं नहीं लेकिन मैं पूछ रहा नहीं, हूँ. जितने लोगों का दिखाया होगा या उन्होंने देखा होगा कुछ मतलब जी जिन जिन रिश्ता हमें से भी शिवांगी आई थी प्रीमियर पे, और आई थिंक जो दादी बनती है उन्होंने भी देखी. शी मैसेज मी पर्सनली दैट शी रियली लाइक्ड इट. आई शिवांगी मैम को पसंद आया. उनको अच्छी लगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. अच्छा रहा. इधर खड़ा रहे तू. I can't believe you guys printed tickets. One thing. I don't know what to say, bro. I just think. I'm super excited. I'm actually super excited. हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है? हाँ? Okay, cool. Whatever I'm gonna चलो. Okay, cool. I think कि climate change and especially जो भी काम डेविड एटनबरो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट करी है to you know not just exploring climate change but also bringing to light so many things that the rest of the human population really needs to know about, because the world is in our hands and it's not just the climate changing, it's humanity has to actually, a shift has to occur within humanity to take care of this climate change. So I'm just hoping that, I mean, not just me but also a lot of other people who actually are in a position of not just influence but can also be change makers for this movement actually do come, take part, talk about it, and yeah, help people take part in the initiative to counter this climate change. I actually believe a lot in sustainability, so I give a lot of my clothes away, and I don't buy new clothes. I am wearing my friend's t-shirt right now. This is how much I believe in sustainability. Not even joking. That's a true fact actually. And I donate all my furniture. I donate a lot of clothes every six to 8 months. I put off. It's just small things, like I use wooden toothbrushes and stuff like that. And I mean, there's a lot of brands also in the company, not in the company, sorry, in the world now, especially in India. Like I use bamboo towels, bamboo toilet paper, like stuff like that. There's a lot of Indian companies that have come out with this stuff. So small changes start at home, so that's what I do. So I mean, if I can do it, anyone can do it, man. It's so easy. Come on, guys. Cool. You made me say toilet paper on news, yeah. Hi, come now, Smita. आ जाओ. हाँ, I'm cutting your light. What is making me more excited? I don't know what is making me more excited. Maybe there are so many people who live in denial. बोलते हैं कि ऐसी फिल्में देखने से पता नहीं अच्छा नहीं लगता है एंड ऑल द स्टफ. तो मैं उस एक्साइटमेंट के साथ आई हूँ कि ऐसी चीज़ें मतलब क्या परिवर्तन हो रहा है जो कि भयानक है, जो कि हमारे आसपास ही हो रहा है. सो वो चीज़ देखने से मे बी आई विल बी मोर केयरफुल, और जो अवेयरनेस मैं कोशिश करती हूँ एनीवेज फैलाने की, शायद वो मैं सही ढंग से और अच्छी तरीके से कर पाऊँ. नॉट रियली कि मतलब सेल्फ डिनाइल मोड में जीना तो बिल्कुल नहीं चाहिए. Yes, आज मैं यहाँ पे आई मीन आई एम जॉइनिंग हर हियर टुडे. Yes, definitely I'm really excited. आज का जो ये फिल्म है, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन है, लेकिन एक बेसिक आई थिंक एज से एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट नाउ, पीपल आर रियलाइजिंग इट.
and such movies are really gonna help definitely. And it should start right from the education, right from schools. I feel people are getting aware, so I'm sure and I hope more such films come in. And cinema is a medium which connects with audience very easily. So I think this is a very good medium, and more people get more aware and start using it. And a small little action with every citizen, taking a small little action can make a huge difference. I have taken a lot of precautions. Even in my blog, you can see मैं बोलती रहती हूँ some changes that are extremely important. प्लास्टिक तो genuinely बैन कर दे, प्लास्टिक घर पे बैन कर देते, लेकिन भाजी मार्केट से लेकर आ जाते हैं तो कपड़े का बैग लेके बाहर जाए ताकि आप उसी में भाजी खरीद के लाए. यूज़ आई मीन मिट्टी का या कांच का या whatever स्टील पीतल के बॉटल्स विच आई डू यूज़. मैं पार्क में भी उतना हैवी बॉटल लेके जाती हूँ और मैं छोड़ के रनिंग भी करती हूँ. सो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस. आई मीन नॉट यूजिंग एल्यूमिनियम, और फिर नॉन स्टिक में खाना नहीं बनाना. आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट. एक तरफ लगता है मतलब लगता है साइको, मतलब पर आप साइको जैसे नहीं करोगे तो आप बच नहीं सकते हो. इनफैक्ट मेरे घर में जो लड़का है हमारा हेल्पर, वो बोलता है हमारे ज़माने में तो मतलब गांव में तो ऐसे नहीं होता है. तो गांव में क्या नहीं होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर जहाँ से अवेयरनेस शुरू होता है, अगर मैं एक इंसान को भी चेंज कर सके, आई थिंक ही विल गो बैक टू हिज विलेज एंड ही कैन चेंज. और वो जो भी खाता था विथ हिज डिफरेंट लाइफ स्टाइल, उसको हो गया डायबिटीज़, तो मैंने उसको वैसे समझाया, देख हाँ अगर सब कुछ को हम लोग कंट्रोल में रख सके, एक ही घर में रह के तुझे हो गया, पर इट्स जस्ट अबाउट कंट्रोलिंग वन सेल्फ. अगर हम शरीर को कंट्रोल कर सकते, हमारे एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते. सो आई थिंक आई एम एबल टू मेक सम चेंजेस इन माई हाउस एंड द बॉय. व्हाट अबाउट यू? डिड यू चेंज योर ड्राइवर? Yes, I did. Okay, no, that's another story. But there's one thing. There's one thing I really want to add up here is बहुत ज़रूरी है ये बात जो मैं हमेशा whenever I travel abroad, I do notice this. They have different way. They segregate the garbage very beautifully. Especially amongst all the countries, I realized Germany was such a place that every household had these 3 garbage bins everywhere. The way the garbage was separated from the basic root is from your house. It is so important. It's easier for the entire people who are involved into this entire garbage disposal, and I think it starts basically from the house. There's so many people working out there and working in such different environment, getting into those gutters, getting into those pipelines, and it's so dangerous for them as well. I think once we start doing this, it will definitely make a lot of difference. We mix up paper, we mix up plastic, we mix up even food, wet food. I think that's an important aspect. It will be easy for our government to have a safer, cleaner environment and a healthier place to live in. ये चीज़ प्लास्टिक के बदले में कुछ और का नहीं हो सकता? ये तो हो रहा, रीयूज हो रहा है, ये रीयूज यूज़ करते रहोगे. Thank you. इसको थोड़ा वैसे क्यों नहीं लगा? Thank you. Hello. Sorry, I can't hear you. And where should I look? Well, I've been a huge fan of all of their series. From the very first BBC Earth series there was. So it's always, of course, amazing to watch, but there's a lot to learn.
from it, you know. And yeah, I love all these shows, so I'm here. असं जैसे कि एनवायरनमेंट इशू बहुत हुआ, आप कितने इनिशिएटिव लेते हैं एनवायरनमेंट, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि वाटर सेविंग करना, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, वो आप कितना ध्यान रखते हैं? Yeah, I try to be as conscious as I can, you know, whether it's conserving electricity or water or, you know, composting your garbage or trying to be vegetarian, because believe it or not, most of the world's resources go into feeding our the animals which we end up eating. So it makes a huge contribution to stop eating animals actually. So it's been about 5 months for me. Thanks. Yeah. So I got this invite yesterday, and the moment I read it's on climate change, I just wanted to be a part of it. I was just talking to her, and you know, we keep shouting on Twitter, we keep talking about it, but we don't really do anything to make a change. I think now the time has come. We all are witnessing climate change. We all are witnessing, you know, what's happened in Australia, what's happening in our own country. Uh, you know, we all should start doing something about it, because I really feel that the time will come when it's gonna be too late. So I'm looking forward to this. I hope lots and lots of people watch it, and they become little concerned about climate change. So you know, we can do what we can do. We all have stopped using plastic. I've gone vegetarian because I don't think so. We need to kill animals anymore to feed ourselves. There are a lot other things that we can do. Um, just save on your water. Just don't waste electricity. We have electricity day now. So I think these are very small, simple things that everybody of us can do. We don't really have to make an effort also to do all these things. So just start from here and see what change we all can bring together. One is Kamatipura, my web series, which is on prostitution. I'm consciously making an effort to do something on social causes, because I really feel that, you know, the time has come. The young generation is ready to listen and see things which we have not done before, and we are the people who can bring change. So it's on prostitution, where India is prostitution is illegal in India, but still we have biggest of the red light areas here. Girls are brought in forcefully. They are forced to get into prostitution. If they oppose, they are killed. So it's basically on that, sending out a very sweet message. So I'm really excited about this one. Then I'm doing another movie with Arjun Rampal called Nastik. That's on religion. How a lot of people are becoming Nastik, and how a guy who's Nastik gets transformed into Astik later on. Yeah. Thank you.